Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivardhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Janvallabha, Girivardhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Girivardhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Janvallabha, Jai Girivardhari. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. So, very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayeet Nashtaprayeshvabhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. So in our previous session, we discussed Maitreya Rishi. He's talking about how after the creation of all the energies of the Lord, after the manifestation of all the energies of the Lord, along with the living entities in the form of demigods in the beginning part of the creation. Of course, this is not primary creation, this is secondary creation. Secondary creation in the sense that because this is material creation, so it keeps getting created and it keeps getting destroyed. So when there is destruction of this material creation, at that time, all the living entities with all their material desires enter into the body of the Lord. And they reside in the body of the Lord with all their desire dormant. Just like when you are sleeping, it's not that you become desireless. Still you have desires, but you are not able to execute these desires because you are sleeping. Again, when you wake up, again you start executing those desires. Similarly, when there is dissolution of this material creation, all the universes, along with all the living entities, with all the different planetary systems, everything, they all enter into the body of the Lord Mahavishnu. And they all are in dormant state in the sleep or in the Yoga Nidra of Mahavishnu. Then again, when there is creation, again when the Lord desires to create and give another chance to the conditioned souls. Now all the souls who are there in the body of Lord Mahavishnu, they are all conditioned souls. So to give them another opportunity for liberation, the Lord again creates this material creation. So that creation we are talking about here. The Lord keeps creating and keeps dissolving. This is not eternal creation, this is temporary creation. That's why it is called material creation, which is external potency of Lord Mahavishnu. And the Lord keeps creating it and keeps destroying it. So why he keeps creating and destroying? Because he wants to give opportunity to the conditioned souls. In one creation, if they are not able to get liberation, when again he creates, at least some of the souls, they may get liberation. Those who are again left, they again may try for liberation in the next creation. So like that, bhutva praliyate. Continuously it's going on. Creation, destruction. And those who are conditioned souls, they are getting opportunities they are getting their opportunities for liberation one after another. So in different creations, those who are left over, again, they get an opportunity for creation.
We can just imagine the number of living entities who are there in this creation. We cannot even imagine the number. It's uncountable. Human beings are 7 billion on earth only on earth. Okay. Now, you just move out of your home and you roam in the street. Just go out of Mumbai or go out of your city. You'll find so many living entities. Trees, plants, creepers, living entities which crawl, living entities which jump, living entities who have tiny microbes, germs. Just imagine how many living entities are there. And this is just 10% of the total number of living entities in the creation, in the spiritual creation. Material creation, only 10% living entities are there. 90% of the living entities are in the spiritual world. So these 10% living entities, they keep getting opportunity for liberation after different creations when the Lord creates. So that creation we are talking about here. So that's what we discussed in the previous session, that Maitreya Rishi, when this creation was done, when this creation began, so all the energies were created along with the living entities in the form of demigods. But demigods could not do anything, so they started praying to the Lord, so that Lord can give them intelligence and energy to execute the affairs of the universe. But so in the previous session, we discussed that the Lord found out that this universe, the activities of the universe is suspended. The activities of the universe was suspended because energies were there, but it was not acting. And if you remember, I gave a very beautiful example also yesterday in the previous session, that if you mix all the colors, until unless the painter paints it, simply mixing of colors cannot produce a beautiful picture. So all the energies, the ingredients are there, the 23 ingredients of the creation we discussed in the previous session. The 23 ingredients include the 5 senses, the 5 sense objects, the 5 working senses, then the 5 elements of creation and the 3 subtle elements. So like that, 23 elements were present along with time factor and along with the living entities, but nothing was moving. Why? We will see now in this shloka why it was not moving and how it will start moving, because the whole creation, the activities were suspended. So how it will get into action, we will see now. So third shloka, shloka number 3. Sonu pravishto bhagavams, Sonu pravishto bhagavams, Cheshta rupena tam ganam, Bhinnam samyojayamasa, Suptam karma prabodhayan. Sonu pravishto bhagavams, Cheshta rupena tam ganam, Bhinnam samyojayamasa, Suptam karma prabodhayan. Translation. Thus, when the personality of Godhead enters into the elements by his energy, all the living entities are enlivened into different activities, just as one engages in his work after awakening from sleep. You see, now what do we see here in this shloka? So anupravishto bhagavamsh. Anupravishto, if you remember, we discussed in the previous session that the Lord enters into this creation to move it, because ultimately if the Lord does not enter, nothing will move. So the Lord, along with his Kala Shakti or mother goddess Kali, that goddess Kali
And the Lord, in his transformed feature of Lord Shiva, he entered into this material creation. He entered into this material creation. Because Lord Vishnu, he creates. It's he who creates everything. But then he transforms himself and then he enters into this material creation along with his destructive potency, which is goddess Kali or Durga Devi. Right? So who is Durga Devi? She is transformation of Mother Lakshmi. And who is Lord Shiva? He is transformation of Lord Vishnu. It is mentioned in the Brahma Samhita that Shiram yatha dadhivikar vishesha yogat sanjayate nahi tatah prithagasti heto yash shambhutam api tatha samupayati karyat govindamadi purusham tamaham bhajami. So Shiram yatha dadhivikar, just like milk, when mixed with a chemical, it transforms into dadhi. Dadhi means yogurt or curd. Similarly, Lord Vishnu, when he enters into this material energy, he transforms into Lord Shiva. His transformation is Lord Shiva. So, that aspect of Lord Vishnu we saw in the previous session, in the last shloka of the previous session. And when Lord Vishnu transforms into Lord Shiva, his internal potency also transforms into Durga Devi or Parvati. So Mother Parvati is basically transformation of Mother Lakshmi. So when Lord Vishnu, he transforms himself as Lord Shiva, at that time Mother Lakshmi transforms herself into Mother Parvati. And her maintenance, so she maintains this material creation in the form of Durga Devi, and destructive potency of Mother Parvati is Goddess Kali. So that's what we discussed in the previous session, if you remember. So Bhinnam, so that's what is mentioned here. Sonu Pravishto Bhagavan. So Bhagavan and Anu Pravishto. Pravishto means entered. He entered. You see, the word Vishnu comes from the word Vishate. We have discussed many times that this word Vishnu, it comes from the word Vishate. Vishate means to enter. Okay. But when Lord Vishnu enters, Lord Vishnu, why he is called Vishnu? Because he enters this material creation. Okay. But when Lord Vishnu enters, he does not associate with material energy. Right? He does not associate with material energy. His association is always with Mother Lakshmi. But when Lord Vishnu enters to associate with material energy, who is material energy? Spiritual world is the internal potency of Krishna. It's manifestation of his original potency, which is Srimati Radharani. Now, material world is the external manifestation of the spiritual world. So that material world is transformation of the spiritual potency, which is a potency of Radharani. So this potency is called Parvati, Mother Parvati. She is the controller. So who is Mother Parvati? Transformation of Lakshmi or original Lakshmi, Adi Lakshmi, which is Srimati Radharani. So that transformation, when it happens,
So this material energy is transformation of spiritual energy. Spiritual energy is controlled by Srimati Radharani. Material energy is controlled by her transformation, which is Mother Parvati. Right. So now when Lord Vishnu has to, so Lord Vishnu, he enters this material creation, but he never associates with Mother Parvati. But when Lord Vishnu has to associate with Parvati, Mother Parvati, he transforms himself into Shiva, Lord Shiva. That is the difference between Lord Vishnu and Lord Shiva. So that's why Lord Brahma says, Shiram Yatha Dadhi Vikar. Vikar. So when there is Vikar in Lord Vishnu, because then he has to associate with Mother Parvati, so he transforms himself into Lord Shiva. So that's why here it is mentioned, so nu pravishto Bhagavansh. So Lord Vishnu, he pravishto means he entered, okay, this material creation. Cheshta rupena tam ganam. Cheshta rupena tam ganam. So when he entered into this material energy, in that attempt, bhinnam samyojana yamasa. Bhinnam means this material energy and all the ingredients of this material energy. Sanyoja, Sanyoj, Sanyoj, that means brought together everything. He brought together all the energies. Because if you remember in the previous session we discussed, all the activities of the universe was suspended. Energies were there, but they were not acting concertedly. They were not acting in harmony. So Sanyojaya Masa means the Lord brought harmony in this material energy. When he entered, he brought harmony. We will see how he brings harmony, because that is the aspect of the Lord called Paramatma, through which he brings harmony. Because you see, now living entities are spirit, and this material energy is matter. Now, spirit can never associate with matter. How can spirit associate with matter? Spirit is it's a superior energy of Krishna, we all. And this material energy is inferior energy of Krishna. But we are controlling spirit. We are in this material body and we are driving this material body. So how is it happening? From where this harmony comes? For example, you sit in the car. Okay. When you sit in the car, you push the button and then the car gets ignited, the engine ignites. Ignition happens in the engine and then you start driving. Actually speaking, if there is no steering, there is no clutch, there is no coordination, can you drive the car? No. You are able to drive the car because the company who has created the car, they have built an interface between you and the body of the car. Same we see in a computer. In a computer also, there is software and there is hardware. When you press the button on the keyboard, or in your mobile also same thing happens. When you press the button on the keyboard, the computer takes input. Now, hardware cannot do that. So how are you able to operate the hardware? You press a button on your computer and printer starts printing. So how you are able to do that? Because there is an operating system or there is a software which is acting as an interface between you and the computer. That's why you are able to operate the computer. Here's a gross example to substantiate this. Similarly, we living entities, we spirit souls, we are superior potency of Krishna.
We cannot associate with this material potency unless and until the Lord brings harmony as Paramatma. So one aspect of the Lord is Lord Shiva, who enters, and then another aspect of the Lord is Paramatma, who acts as an interface between us and this material energy. Because of him, we are able to operate this material energy. If Paramatma is not there, we cannot operate this material energy. We are lifting our hand, isn't it? How we are able to lift our hand? You desire, I want to lift my hand. You are able to lift, no? If you desire, I want to lift this table, can you lift? No. Suppose if I desire that I want to lift this table, will I be able to do? No. But this body, this is also matter, but because I am within this body, I am able to lift. Why? Because we are spirit souls. We have nothing to do with this body. So what is the software which is operating between us and this hardware called body? So that software, that interface between us and this body is Paramatma. So Vishnu means who permeates into every atom, who enters into every atom in the universe. He controls every atom. He is conscious of every living entity in the universe, and he is conscious of every atom in the universe. That's why he is called Param Atma. Just like I am conscious of every part of this body, Lord Vishnu is conscious of every part of this creation. So when we desire to lift our hand, what happens? So I desire to lift my hand. Now Lord Vishnu is present in every atom. So when I desire, Lord Vishnu sanctions. Man proposes, God disposes. So when I desire to lift my hand, Lord Vishnu, he sanctions. And then I lift my hand. But this process is so fast. It's so fast that you don't realize that actually we can just desire. But actually it's he who is sanctioning. But how he sanctions? On the basis of our past desires and actions. When we do good activities, when we do pious activities, then we develop control. The more you do pious activities, the more you develop, the more freedom you get, the more control you develop over this material energy. And then there are certain special things which you can do. But if you misuse your desires, if you misuse that special power given to you, then you develop bad karmic reaction and sinful activities. So based on our karmic reactions, the Lord sanctions. So we desire and he sanctions, and that's how everything is happening. So demigods are empowered to some very higher aspects of, they can control some very higher aspects of the universe. And we human beings have little freedom, very little, very tiny freedom. We can control little bit this material energy, right? But until and unless the Lord brings harmony between living entities and this material energy as Paramatma, this material energy cannot move. That's what is mentioned in the shloka, you see. So bhinnam, this means this material energy. Bhinnam means separated. Sanyojayamasa, the Lord brought them together, the living entities and the separated energy, which is matter. Suptama karma prabodhayan, and then everything started moving, just like after sleep. When you are sleeping, things get suspended, and when you wake up, again things start moving. Similarly, this universe was suspended
And when the Lord, he entered into this creation, and then when he facilitated harmony within the all the energies, then things started moving. Karma prabodhayan. Then this material energy started, karma prabodhayan means started working. Suptam. You see this word suptam. Suptam means sleep. So just like after sleep, after getting up from sleep, you start working. Similarly, this universe also, when there was previous dissolution, when there was destruction, this whole universe entered into the Lord's body and everything was sleeping, suspended. And again, when the Lord desired and he brought harmony into this creation, again things started moving. So whenever there is dissolution of this material creation, all the living entities, they remain in dormant state, unconscious. They remain in sleep state, unconscious. And then again, when there is creation, they become conscious because they get new bodies. So in this creation, when a living entity is born, how he gets bodies? Because in the previous creation, when there was destruction, he would have died with some desire. That desire, with that all the karmic reaction in the previous creation, with that, just like in this body, we are working, we are creating our next body, right? Similarly, in the previous body, in the previous creation, the desires that he had, based on that, he will get body in this universe, in this creation. So it may look like, the time scale is immense, but actually we are in unconscious state, we are in dormant state, and that is why it's like taking next birth for all of us. Only the Lord knows that he has again created everything, all these things. So these demigods, when the creation took place, they all knew what was their responsibility. Why? Because in the previous creation, they were doing that. Same bodies they got in this life. So for them, it is like normal. Only the Lord knows that now he has made another creation. He has again created after destruction. So the living entities, those who did not get liberation in the previous creation, in this creation, they are given an opportunity to get liberated. Right? Now, what is liberation? Why the living entities have come into this material creation? It is said that no one can trace when we fell into this material world, because so many creations have taken place. No one can trace out or determine when they came into this material creation. It is said, Anadi karama phale podi bhavarnava chale. Anadi karama phale. Anadi means since eternity, we have fallen into this material world and we are fallen into this cycle of karma, cycle of action and reaction. Bhavarnava chale. And since that time, we have been stuck in this material world and we keep changing bodies. Sometimes we become human beings. If we do good activities, we go up, we become demigods. If we do bad activities, we go down into hellish planets, or when we do sinful activities, we get lower species of life forms. Again, we get promoted to human beings. Again, if we get good association, we do good activities, again we go up, we go to higher planetary systems. Again, when our pious activities get depleted, then again we become human beings. So like that, this is going on since millions and millions of births, or maybe millions and millions of creations and destructions. It has gone on like that. So when there is another creation, all these living entities are given an opportunity to get liberation.
And what is liberation? They can revive their relationship with Krishna. We all have our relationship with Krishna. We have forgotten that. We have forgotten what is our relationship with Krishna. The living entities in this material world, they are working according to their past desires. After this body gets destroyed, we forget everything. The soul forgets everything. But Krishna is so merciful. We cannot imagine how merciful Krishna is. That Krishna within our heart is present as Paramatma. And when we are born, do we remember anything what we have done in our past life? No. But it's Krishna who is seated within us as Paramatma. He directs us and reminds us of our past activities and desires. And based on that, he gives us the next body. And that's how we fulfill those desires in our past life. So this unseen guidance given by Krishna is called as destiny. And we continue our life being influenced by the three modes. Perpetually, we have been continuing our life in this material existence. Right? And Lord, as Paramatma within our heart, He is waiting that when this living entity will turn to me, when the soul will start questioning his existence. That's why the Lord comes and gives Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. That's why Krishna descends. Sometimes he personally descends, or sometimes he takes avatar. Sometimes he personally comes down, and sometimes he takes avatar as different forms of Narayan, like Lord Narsinghadev, Lord Ram, Lord Lakshman, Lord Balram. So like the different avatars he takes. But when he personally descends, he gives us the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Why? So that we can finish this business of material existence, birth after birth, this struggle, this continuous taking bodies one after another. We can finish this. What is Krishna saying in the Bhagavad Gita? Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam braja. Give up all your so-called material desires and activities and surrender unto me. Come to me. That's why he is present as Paramatma, to witness when a living entity will surrender to me, will follow my direction, and he will serve me. Because spirit soul means we are loving servants of Krishna. Right? So this, our original consciousness is Krishna consciousness. And that original consciousness can be revived by Shravanam and Kirtanam. These are the two methods. All other methods are based on these two methods. These two are backbone of our spiritual life. Shravanam and Kirtanam. So when we hear the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and by chanting of the Hare Krishna Mahamantra, our original consciousness gets revived. We don't know what we have got. All of us. We don't know what we have got. Out of zillions and zillions of living entities, we are so fortunate that we have got Krishna consciousness. We cannot imagine. You see here what we are discussing.
How many creations have happened? How many times we have been born? Now in this life, we are getting an opportunity to finish this business. That's why we have to be very serious and sincere in hearing Bhagavatam and Bhagavad Gita and in chanting of the Hare Krishna Maha Mantra 16 rounds. If these two things we can do throughout our life, we go back to Krishna. So after, if we do this whole life, then when we close our eyes, when we wake up, when we open our eyes, we'll be with Krishna. So that's what we see here. You can like the video, you can comment. You can also subscribe to our channel. Those who are, all of you who are watching on YouTube, you can also share with your friends so that more and more people can get this divine knowledge. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा, इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि पहले हमने देखा कि देवता लोग जो हैं उन्होंने प्रार्थना किया, अपनी प्रार्थना किए भगवान से। और मैत्रेय ऋषि इस अध्याय में बता रहे हैं कि किस प्रकार सारी शक्तियां तो उपस्थित थीं इस जड़ जगत में, लेकिन ये सारी शक्तियां गतिविधियां रुकी हुई थी। जिस प्रकार हमने देखते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो सारी गतिविधियां रुक जाती, तो उस प्रकार एक सुप्त की अवस्था, यानी सोने जैसी अवस्था थी इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की। ये सारी शक्तियां थी और हमने देखा 23 शक्तियां, 23 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंचभूत, 5 विषय और 3 सूक्ष्म सूक्ष्म शक्तियां भगवान की। तो ऐसे 23 शक्तियां थी, वो सारी उपस्थित थी, समय काल भी और
जीव देवतारों के रूप में सभी उपस्थित थे। लेकिन हमने देखा पिछले सत्र में मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि भगवान ने देखा कि गतिविधियां रुक गई हैं, चल ही नहीं रहा। कुछ चल नहीं रहा, सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा। फिर हमने देखा कि फिर भगवान इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं, अपनी विध्वंसक शक्ति काल, जो काली माता के रूप में है, जो दुर्गा देवी की ही रूप है, उनके साथ प्रवेश किया। और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार गति आई ब्रह्मांड में। तो तीसरे श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे अपनी चर्चा को। सोनु प्रविष्टो भगवांश चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। सोनु प्रविष्टो भगवांश चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Thus, when the personality of Godhead enters into the elements by his energy, all the living entities are enlivened into different activities, just as one engages in his work after awakening from sleep. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं महात्मा विदुर से कि इस प्रकार जब परम पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में प्रवेश करते हैं अपनी शक्ति के साथ, सारे जीव गतिमान हो जाते हैं अलग अलग कर्मों में। जिस प्रकार निद्रा से उठने के बाद हम सब गतिमान हो जाते हैं, कर्म में लग जाते हैं। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि। तो कह रहे हैं कि सोनु प्रविष्टो भगवांश, अनुप्रविष्टो, प्रविष्टो, प्रविष्टो का मतलब होता है प्रवेश कर जाना। तो भगवान जो है वो प्रवेश करते हैं इस जगत में। और हमने देखा अपने पिछले सत्र में कि भगवान कैसे प्रवेश करते हैं। तो जब वो प्रवेश करते हैं तो ये जो जड़ जगत है, ये बहिरंग शक्ति है, भगवान की बाहरी शक्ति। और भगवान विष्णु की शक्ति कौन है? उनकी अंतरंग शक्ति लक्ष्मी माता। भगवान विष्णु कृष्णा के विस्तार हैं और लक्ष्मी माता राधा रानी की विस्तार हैं। ठीक है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथग अस्ति हेतो यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिस प्रकार दूध जब किसी एक रसायन से उसको मिलाते हैं तो वो दधी, क्षीरम यथा दधी, दधी का मतलब दही बन जाता है। ठीक है। दूध को आप किसी रसायन से मिलाओगे तो वो दही बन जाता है। लेकिन दही जो है विकार है दूध का। तो कह रहे हैं कि यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात्, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में जब भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं अपनी बहिरंग शक्ति के संपर्क में आने के लिए, तब वो
वो जो विकार रूप है भगवान विष्णु का, उन्हें ही शिव कहते हैं, उन्हें ही शिव कहते हैं। अब देखिए, भगवान विष्णु का भी नाम विष्णु क्यों है? विशते, विशते शब्द से भगवान विष्णु का नाम है। विशते मतलब जो प्रवेश करते हैं इस जगत में या इस ब्रह्मांड में। तो भगवान विष्णु भी प्रवेश करते हैं, लेकिन वो कभी बहिरंग शक्ति के साथ संपर्क में नहीं आते। वो हमेशा लक्ष्मी माता के संपर्क में रहते हैं। ये जो जड़ जगत है, या जो ये जड़ सृष्टि है, ये दूसरी सृष्टि है। पहली सृष्टि कौन है? आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ, वो भगवान की पहली सृष्टि है, कृष्णा की। ठीक है, वो वास्तविक सृष्टि तो वही है। ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, ये तो ये तो दूसरी सृष्टि। पहली सृष्टि तो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत है। तो जो उसे अंतरंग शक्ति कहते हैं, जो वास्तविक सृष्टि है, वैकुंठ जगत है, उसे अंतरंग शक्ति कहते हैं। और उसको कौन नियंत्रित करता है? उसकी कंट्रोलर कौन है? तो वो है राधा रानी, आदि लक्ष्मी जिन्हें हम कहते हैं। सारी लक्ष्मी उन्हीं से, उन्हीं के विस्तार हैं। जिस प्रकार सारे नारायण कृष्णा के विस्तार हैं, वैसे ही सारी लक्ष्मी जो है वो राधा रानी के विस्तार हैं। तो वो जो शक्ति है वो राधा रानी के कंट्रोल में है, वो उनके नियंत्रण में है। ठीक है, अब उसी का विकार है ये जड़ प्रकृति, उसी से निकली है, हमने ये चर्चा की हुई है ना। तो उसी जो आध्यात्मिक सृष्टि है या आध्यात्मिक जगत है जिसे वैकुंठ कहते हैं, उसी से ये जड़ सृष्टि निकली है। ठीक है, तो ये जो जड़ सृष्टि हम देख रहे हैं, ये उसी वास्तविक सृष्टि जो है उसका विकार स्वरूप है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसके नियंत्रण किसके हाथ में है? तो लक्ष्मी माता, जब भगवान विष्णु विकार लेते हैं शिव के रूप में, तो लक्ष्मी माता विकार लेती हैं पार्वती के रूप में, माता पार्वती के रूप में। तो अब भगवान विष्णु तो लक्ष्मी माता उनकी अंतरंग शक्ति। तो जब अब पार्वती माता कौन है? जो इस जड़ प्रकृति की कंट्रोलर है, उसको नियंत्रित करती हैं, जिन्हें हम दुर्गा भी कहते हैं। तो पार्वती माता और दुर्गा देवी वो इस जड़ प्रकृति को नियंत्रित करती हैं, उनकी कंट्रोलर है। और वो किसकी विकार है? लक्ष्मी माता की। तो जब भगवान विष्णु शिव बनते हैं, जब उनमें विकार आता है, और वो क्यों आता है? क्योंकि विष्णु तो अंतरंग शक्ति के साथ रहते हैं, लक्ष्मी माता के साथ, लेकिन जब उनको अपनी बहिरंग शक्ति के साथ संपर्क में आना होता है, तो वो विकार रूप अपना लेते हैं। तो उनमें विकार आता है जिसे हम भगवान शिव कहते हैं। जब उन्हें माता पार्वती यानी जड़ प्रकृति की जो कंट्रोलर है, नियंत्रक है, जब उनके साथ उनको संपर्क में आना होता है, तब जो उनका रूप है उन्हें ही शिव कहते हैं, वही भगवान शिव है। तो यहां पर इस श्लोक में कह रहे हैं, सोनु प्रविष्टो भगवान अनुप्रविष्टो। तो प्रविष्ट यानी भगवान प्रवेश तो कर गए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सोनु प्रविष्टो भगवान। तो भगवान जो है वो अनुप्रविष्टो, वो प्रवेश कर गए, चेष्टा रूपेण तम गणम। और जिसके कारण उनकी जो प्रवेश करने की जो विधि है, उसके कारण गणम भिन्नम संयोजयामास। गणम का मतलब जो जीव हैं, उनकी जो जीव शक्ति है भगवान की, हम लोग सब लोग
तो वो जो जीव लोग हैं, जीव जंतु, और भिन्नम। अब भिन्नम क्या है? तो भिन्नम जो है वो भगवान की जड़ प्रकृति है। भिन्ना प्रकृतिमष्टधा, कृष्ण भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरे अमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अब ये दोनों शक्ति, दोनों 7वें श्लोक के दोनों श्लोक, 7वें अध्याय भगवत गीता के दोनों श्लोक, इस उससे अब आप देखिए यहाँ पर गणम मतलब भगवान की परा प्रकृति, जीव हम लोग, और भिन्नम मतलब भगवान की अपरा प्रकृति, जिसे हम ये जड़ जगत कहते हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार। तो ये पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की बहिरंग शक्ति है। जो 23 हमने तत्व देखे वो सारे, तो वो भिन्नम शक्ति है। तो गणम यानी जीव और भिन्न शक्ति, भगवान की जो बहिरंग शक्ति है, पंचभूत और सारे जो हमने 23 तत्व देखे थे पिछले सत्र में, संयोजयामास, इनको भगवान ने संयोजित किया। इनको भगवान ने संयोजित किया, मिला दिया, इनमें सामंजस्य स्थापित किया, हार्मनी। क्योंकि जब तक इनमें संयोजन नहीं होगा तब तक चीजें चलेगी कैसे? आप देखिए, हम लोग जो हैं जीव, जो जीवात्मा है, वो भगवान की परा प्रकृति, हम लोग भगवान की परा प्रकृति है, यानी हम भगवान की उच्च प्रकृति, ऊंचे। और ये जो जड़ जगत हम देख रहे हैं, पंचभूत और ये सारी चीजें, 23 तत्व जो हमने देखे, वो भगवान की अपरा प्रकृति है, यानी वो निम्न, नीचे की प्रकृति। तो फिर हम इसको चला कैसे पा रहे? हम इसको, अब ये शरीर में हम बैठे हैं, लेकिन शरीर को हम चला कैसे रहे हैं? भाई हमारा तो कोई संबंध ही नहीं है इसके साथ। ये तो बहिरंग शक्ति, तो बाहरी प्रकृति है भगवान की, हम तो भगवान के परा प्रकृति हैं। तो हम चला कैसे रहे हैं इसको? तो उसके लिए भगवान एक और विस्तार लेते हैं, जिन्हें कहते हैं परमात्मा, परम आत्मा। हम आत्मा है और भगवान जो है वो परम आत्मा है। हम इस शरीर में हमारी चेतना है, तो इस शरीर के हर अंग में हमारी चेतना है। हम हमें पता है हर अंग के प्रति हमारी चेतना जागृत है। उसी प्रकार से परमात्मा का मतलब होता है कि भगवान की जो चेतना है वो पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जिस प्रकार हमारी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, उसी प्रकार परमात्मा का मतलब भगवान की चेतना कण कण में व्याप्त है। क्योंकि हम नहीं चला सकते इस जड़ प्रकृति को, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो जीवात्मा हैं, हम इस जड़ प्रकृति को चला कैसे रहे हैं? अभी देखिए, मैं सोचता हूँ कि मेरा हाथ उठा लो, मैंने उठा लिया ना। अब ये जो शरीर है ये जड़ का बना हुआ है, ये टेबल भी जड़ का बना हुआ है, और मैंने इच्छा की कि मैं टेबल उठा लूं, मैं उठा पा रहा हूं क्या? मेरी इच्छा से नहीं उठा पा रहा। क्यों? तो ये शरीर के प्रति हमारी चेतना है, और भगवान जो है हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। हम भी बैठे हैं, कृष्णा भी बैठे हैं परमात्मा के रूप में। तो जब हम इच्छा करते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं
कि जब हम इच्छा करते हैं कि मुझे ये हाथ उठाना है, क्योंकि भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में कण कण में व्याप्त है, इसलिए उन्हें विष्णु कहा जाता है। जो हर अणु में विस्मित है, जो हर कण कण में विस्मित है, वो विष्णु है। तो जब हम हाथ उठाने का सोचते हैं, तो क्योंकि भगवान विष्णु हर अणु में व्याप्त हैं, उनकी चेतना व्याप्त है, तो भगवान इसे अनुमति देते हैं। अनुमंता उपदृष्टा। तो वो पहले हमारी इच्छा को सुनते हैं, हृदय में बैठे हैं ना। तो जब हम इच्छा कर रहे हैं ना कि हाथ उठाना है, तो भगवान बैठ के सुन रहे हैं, इसलिए तो बैठे हुए हैं हृदय में हमारे साथ। तो जब वो सुनते हैं तो इसे अनुमति देते हैं, अनुमंता। और जब वो अनुमति देते हैं तो हम ये हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि वो हर कण में व्याप्त है, उनकी चेतना परमात्मा है ना वो। तो वो होता है और हमको लगता है कि मैंने हाथ उठा लिया। आप देख रहे हो, इसी को अहंकार कहते हैं। मुझे लगता है मैंने उठाया, मैंने किया, जबकि करने वाले वो हैं। जीव सिर्फ इच्छा कर सकता है, मनुष्य इच्छा करता है, अनुमति भगवान देते हैं। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो हम सिर्फ अपनी इच्छा कर सकते हैं। कई लोग हैं जो इच्छा करके भी हाथ नहीं उठा सकते, जैसे पेड़ पौधे, अनुमति नहीं है। तो भगवान किस आधार पे अनुमति देते हैं? वो उसे कहते हैं हमारे कर्म और 3 गुण। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अधिक स्वतंत्रता मिलती है, बुरे कर्म करते हैं तो बहुत कम स्वतंत्रता मिलती है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें बहुत कम स्वतंत्रता है, लेकिन मनुष्य जो है उनमें बहुत अधिक स्वतंत्रता है। और देवताओं में तो बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि वो पुण्य कर्मों के बाद मनुष्य देवता बनता है। बहुत अच्छे अच्छे मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो वो देवता बन जाता है। देवता लोगों की जो स्वतंत्रता है वो बहुत अधिक है मनुष्यों से। तो उस स्वतंत्रता को, जितनी अधिक स्वतंत्रता होती है, यदि हम उसे दुष्प्रयोग करते हैं तो हमें पाप चढ़ता है। उसी को कहते हैं पाप। पाप क्या होता है? कुछ नहीं, हमारी स्वतंत्रता का जो दुष्प्रयोग है उसे ही पाप कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि हम इस जड़ जगत को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकते। ये सब भगवान की इच्छा, और हमको जो थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है उन्होंने, उसके आधार पे चल रहा है। बहुत थोड़ी सी स्वतंत्रता है, ज्यादा नहीं है। हमें सृष्टि को नहीं चला सकते, थोड़ी सी है, थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो लेकिन वो भी भगवान की अनुमति से होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है, लेकिन उसका जब हम दुष्प्रयोग करते हैं तो फिर वह स्वतंत्रता खत्म भी हो जाती है, उसे नष्ट भी कर दिया जाता है भगवान के द्वारा। तो इस प्रकार ये जो सृष्टि है जो हम देख रहे हैं, ये दूसरी सृष्टि है। पहली सृष्टि तो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ। ये दूसरी सृष्टि है कृष्णा की। कृष्णा जब विकार लेते हैं तो लक्ष्मी माता पार्वती का विकार लेती है, और इस तरह से सृष्टि में हमने देखा पिछले सत्र में कि भगवान प्रवेश करते हैं और इस सृष्टि को हम देख रहे हैं यहाँ पर कि संयोजित करते हैं, उनमें हार्मनी लाते, उनमें तारतम्यता, उनमें सामंजस्य स्थापित कर देते हैं, जिससे ये सृष्टि, अब देखिए क्या लिखा है, सुप्तम कर्म प्रबोधयन। तो जैसे सोने के बाद हम कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो सारी गतिविधियां रुक जाती हैं, लेकिन वापस से हम जब जागृत होते हैं, जब जगते हैं, तो फिर हमारी सारी गतिविधियां, कर्म करना हम प्रारंभ कर देते हैं। कल रात को जो सोच के हम सोए थे, आज सुबह उठ के उस कर्म को करते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से सृष्टि जब नष्ट करते हैं
तो ये सृष्टि जो है, जो दूसरी सृष्टि है, ये बार बार नष्ट होती है और बार बार इसे भगवान इसकी सृष्टि करते हैं। बार बार सृष्टि होती है और बार बार विनाश होता है। वही सृष्टि हम यहां पर देख रहे हैं। इससे पहले जब सृष्टि थी, ये सारे ब्रह्मांड और सब कुछ, तो उस समय असंख्य जीव थे। जब विनाश हुआ तो सारे असंख्य जीव सृष्टि के साथ भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो सुप्त अवस्था में, यानी सोने जैसी अवस्था में, निद्रा जैसी अवस्था में रहते हैं। फिर जब भगवान इच्छा करते हैं कि अब मुझे अगली सृष्टि करनी है, क्यों करते हैं सृष्टि बार बार? ताकि जो जीव बचे हुए हैं उन्हें मोक्ष, उन्हें वापस से भगवान के पास वापस जाने का मौका मिले। उसके लिए दूसरी सृष्टि फिर से करते हैं कि जो जीव हैं उन्हें फिर से मुक्ति का एक और मौका मिले, भगवान के धाम जाने का एक और मौका मिले। आप अपने घर से बाहर निकलिए, आप सभी थोड़ा सा अपने शहर के बाहर निकलेंगे तब आपको दिखेगा कि कितने जीव होते हैं। मुंबई के बाहर जाते हैं, कितने असंख्य पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इतने अनगिनत जीव हैं, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितने जीव हैं। मनुष्य तो सिर्फ 7 अरब हैं, और वो सिर्फ पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं। असंख्य जीव हैं, असंख्य, गिनती नहीं कर सकते आप। गिनती क्या, आप कुछ सोच भी नहीं सकते, इतने जीव हैं इस सृष्टि में। कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, घास, आप सोच रहे हो कितने जीव हैं। और ये सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहे हैं। ऐसे अनंत ग्रह हैं एक ब्रह्मांड में, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, कितने जीव हैं। तो शास्त्रों में बताया गया अनादि कर्म फले। हम अपना ट्रेस नहीं कर सकते, यानी हम पता नहीं कर सकते कि कब से हम इस जगत में फंसे हुए। अनादि कर्म, अनंत काल से, पता नहीं कितनी सृष्टि हुई चली गई, कितने बार भगवान ने सृष्टि की और विनाश कर दिया, कितने करोड़ों अरबों खरबों जन्म ले लिए मनुष्यों ने। तो ये बार बार सृष्टि जो भगवान करते हैं वो इसी के लिए करते हैं, मनुष्यों को और जीवों को फिर से मौका मिल सके। तो जो हमारी पिछले जन्म में हमारी इच्छा होती है, उस आधार पे हमको इस जन्म में शरीर मिलता है। और ये जब शरीर हम छोड़ते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। अगला शरीर में हमें कुछ, अब इस शरीर में हमें कुछ याद नहीं है पिछले शरीर में हमने क्या किया था। लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में, भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने इतना हमसे प्रेम करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं परमात्मा के रूप में? हमें दिशा देते हैं। हम तो भूल चुके हैं पिछले जन्म में हमने क्या किया था। तो जो हमारी इच्छा है उसके आधार पे इस जन्म में हमको शरीर देते हैं, और फिर हमारी जो इच्छाएं हैं उसे पूरी करने का मौका देते हैं। क्योंकि वही तो हैं जो संयोजन कर रहे हैं हर चीज का। इस जड़ प्रकृति और हमारे बीच में कौन है? जैसे आप गाड़ी चलाते हैं या जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं। अब ये कंप्यूटर मैं कैसे चला पा रहा हूँ? क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर है कि नहीं? सॉफ्टवेयर के कारण मैं चला पा रहा हूँ ना, नहीं तो इस हार्डवेयर को मैं कैसे चलाऊंगा? टीवी लेके उठा के ऊपर नीचे करूंगा तो चलेगा क्या? टीवी नहीं चलेगा ना, ये तो सॉफ्टवेयर से चल रहा है। उसी तरह गाड़ी आप चलाते हैं तो आप कैसे चला पा रहे हैं? वो तो टायर और टिन को मिला दिया गया है। आप कैसे चला रहे हैं? क्योंकि उसमें आपके और गाड़ी के बीच में सामंजस्य स्थापित किया गया है। उसी प्रकार हमारे और इस जड़ प्रकृति के बीच में कौन बैठा हुआ है, जो जिसके कारण हम इस जड़ प्रकृति को ऐसा लग रहा है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं? कौन बैठा है? वो है परमात्मा, भगवान।
तो भगवान पिछले जन्म में हमने क्या कर्म, क्या इच्छाएं थी, वो उनको याद है, और इस जन्म में उसी आधार पे हमको शरीर मिलता है, उसी आधार पे हम कर्म करते हैं। तो ये जो हम नहीं देख पाते ये सब, इसी को कहते हैं डेस्टिनी, इसी को कहते हैं भाग्य। और इसके कारण हम इस जड़ प्रकृति में फंसे रहते, तीन गुणों में, तीन गुणों के संपर्क में आके ये सब हो रहा है। और समय इसको इसको करवा रहा है, समय के अनुसार ये सब होता है। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमको दिशा देने के लिए बैठे हुए, और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब जीव मेरे तरफ पलटेगा। और इसीलिए कृष्णा अवतार लेते हैं। जब वो स्वयं अवतार लेते हैं तो वो कृष्णा है, और कभी कभी वो अपने नारायण रूपों को भी इस जगत में भेजते हैं। जब वो स्वयं आते हैं तो हमें भगवत गीता और भागवत देखे जाते हैं, ताकि उसको पढ़ के, उसको सुन के हम वापस से हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो स्थापित कर सके। हम सब का कृष्णा के साथ संबंध है, हम अभी भूल चुके हैं। इसी को सुप्त अवस्था कहते हैं, सोने की अवस्था। तो हमारी वास्तविक चेतना क्या है? कृष्ण चेतना, भगवत चेतना। हम सब वास्तविक रूप में कृष्णा के प्रेमी हैं, उनके प्रेम, उनके दास हैं, और हमारा प्रेम का संबंध है कृष्णा के साथ। लेकिन अभी हमें हमें याद नहीं है। तो वो उसी के लिए भक्ति का मार्ग कृष्णा भगवत गीता में बता के जाते हैं। पूरी भगवत गीता में क्या बोला है कृष्णा ने? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वही करके हम वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये जो पूरा जो खेल रचा है भगवान ने, वो हमारे लिए रचा है, ताकि हमें पता चले कि हम इस जगत के नहीं हैं, हमें वापस जाना है भगवान के पास। और उसी के लिए ज्ञान दिया है भागवत और भगवत गीता का। इसीलिए श्रवणम और कीर्तनम, भागवत भगवत गीता सुनना और हरि नाम का जप करना, भगवान के नाम का जप करना, ये दो मार्ग से ही, ये दो मार्ग हमारे रीढ़ की हड्डी हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के। इससे हमारी जो भगवत चेतना है वो वापस से जागृत हो जाती है, और तब जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो सीधा भगवान के धाम वापस। आंख बंद करेंगे, यदि कोई नियमित रूप से भागवत श्रवण कर रहा है, भगवत गीता भागवत का, और हरिनाम का 16 माला का जप कर रहा है, तो जब वो शरीर छोड़ेगा, जब आंख बंद करेगा, जब आंख खोलेगा तो कृष्णा सामने होंगे। हमको पता नहीं है हमको क्या मिला हुआ है। ये जो कृष्ण भक्ति हमको मिली है, भागवत और भगवत गीता हम सुन रहे हैं, हमको अंदाजा ही नहीं है कि कितना विरला और कितना दुर्लभ है ये। हमको नहीं अंदाजा है। तो इसका लाभ उठाना है, और दोबारा जन्म नहीं लेना है, भगवत धाम वापस जाना है, इस सृष्टि में नहीं आना है। उसी के लिए ये सब कृष्णा बता रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि सब तक ये संदेश पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।